Hello, everyone, and good afternoon. Welcome to the Hindu editorial analysis of 11th of May, brought to you by Unacademy, and I am Vaishnavi, who is going to discuss the editorial. I hope you can see and hear me. All right, so you can see and hear me. Hi, everyone. Good evening. Good afternoon. Gorika, hi, Jai Hind to you too. Hello, Alpesh. Hello, Ashutosh. Vaishnavi, hello. All right, so I'll wait. Ria, hi, good afternoon. Aditi, hey. I am doing fantastic as usual, and I hope you guys are doing well too. Ashu, hi. क्लास हमेशा होती है मंडे टू फ्राइडे इफ वी डोंट हैव अ मैराथन देन क्लास हमेशा होती है ओके सो डोंट वरी निशिता प्रोबेबली लेट होगी लेकिन होगी जरूर ओके सो शुरू करते हैं कैन वी गेट स्टार्टेड कैन वी गेट स्टार्टेड हाय हनाया गुड आफ्टरनून हेलो राही गुड आफ्टरनून हाय आशु Ashu, I already said hi. Ashu is saying yes, we should get started. Hi, Kathamrita. Good afternoon. My day is going well, but I wouldn't say charming yet. Let's see how the day unfolds. लेकिन अभी तक तो ठीक ही ठाक जा रहा है. Not, I wouldn't say that great. I hope your day is going charming. Gorika is ready. Okay. So let's get started. Let's begin with the day. Greetings and salutations हो गए हैं हमारे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं vocabulary करते हैं but before we go to vocabulary you need to know about my Telegram channel which is this is me and this is my Telegram channel and आप अगर सिंपली टाइप करेंगे Telegram पे जाके Unacademy_Vaishnavi_CLAT तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो स्कैन द QR code and then you will be able to find me अगर वैसे भी नहीं मिल रहा है then you can simply type Vaishnavi Pandey 31 not 9 31 um, and you will be able to find my channel okay अगर ऐसे नहीं मिल रहा और ऐसे भी नहीं मिल रहा है then this is the way my day food study sleep and masti very nice Nishita I food study sleep and masti and I hope masti is not troubling anyone Nishita okay all right so these are the words let's get started with the words सबसे पहला word हमारा vocabulary में है churn करना मतलब किसी चीज को फेंटना होता है okay किसी चीज को blend करना फेंटना whip करना all these are churn okay so to churn something so यहाँ पर situational use हुआ है churn का connotation use हुआ है situation के हिसाब से churn so churning an event is basically causing और something that is changing something कोई चीज ऐसी चीज जो बहुत तेजी से चल रही है और change कर रही है चीजों को vigorously okay so that is churn according to the situation यहाँ पर actual meaning दिया हुआ है churn का with reference to liquid जिसका मतलब होता है move or cause to move about vigorously कोई चीज बहुत तेज तेज फेंटना is basically churn so churn can be used in situation where it is being used over here in this editorial जिसमें यूज किया गया है that to
इंडिकेट, क्या इंडिकेट करने के लिए कि कोई चीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत विगरसली बढ़ रही है, चेंज हो रही है. ओके. Anticipation, all these are easy words. Okay, churn is an easy word, anticipation is an easy word. Anticipate करना मतलब कुछ expect करना. Okay, आप किसी situation के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज की उम्मीद कर रहे हो. Okay, so uh, we anticipated that RCB will win the match. Okay, we anticipated that RCB will win the match. That means we predicted that, or we expected that RCB will win the match, but got disqualified. Anticipation is a noun which means the action of anticipating something, expectation or prediction. Okay, so anticipation, TION जब आ जाता है तो this becomes the noun और इसका verb form क्या होगा? Anticipate. Okay, anticipate something is the verb form. Anticipation of something is the action of anticipating something. Okay, so basically predict करना या कुछ उम्मीद लगाना is anticipate. To claim the mantle is a phrase. To claim the mantle, जिसका मतलब होता है if you take on the mantle of something such as a profession, किसी भी profession का या किसी job का आप mantle ले लेते हो, उसका मतलब क्या होता है? You take on the responsibilities and duties which must be fulfilled by anyone who has this profession or job. तो आप क्या कर लेते हो, उस job के साथ associated जितनी भी responsibility होती है आप उसको ले लेते हो. ठीक है. So to claim the mantle is to take the responsibility along with the job. Okay, that is it. Okay, so to claim the mantle हो गया, churn हो गया, anticipate हो गया. Rebel is also a common word जो हमने पहले भी देखा है अपने editorials में. Rebel करना is a rebel is a person who rises in opposition or armed resistance against an established government or leader. तो ऐसा कोई person जो एज एन ऑपोजिशन राइज करता है, किसके अगेंस्ट राइज करता है एज एन ऑपोजिशन? द रूलिंग पार्टी या जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस पैदा करने की कोशिश करता है या आर्म्ड रेजिस्टेंस पैदा करने की कोशिश करता है विद गन्स एंड वायलेंस एंड ऑल दैट, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के साथ, या बेसिकली ओवरथ्रो करने की कोशिश करता है द एग्जिस्टिंग पार्टी और द इनकम्बेंट गवर्नमेंट को. ओके, इनकम्बेंट गवर्नमेंट को अगर रिप्लेस करने की कोई कोशिश करता है उसको रिबेल कहते हैं. ओके, सो द पर्सन इज अ रिबेल. ओके, दिस पर्सन इज अ रिबेल एंड ही ऑलवेज बेसिकली अगर हम नॉर्मल वे में भी देखें तो रिबेलियस बिहेवियर होता है लोगों का. ये वर्ड भी हम देखने वाले आगे. रिबेलियस बिहेवियर होता है. रिबेलियस बिहेवियर में क्या होता है? रिमेंबर इन स्पेलिंग रूल्स वी सॉ कि एल अगर सिंगल होता है तो अगर वावल साउंड लग जाता है, वावल सफिक्स लग जाता है तो डबल एल हो जाता है. फॉलोइंग द स्पेलिंग रूल्स, रिबेलियस इज बेसिकली अगर कोई रिबेलियस नेचर का है तो आप जो भी कह रहे हो उनको करने, वो उसके डेफिनेटली अगेंस्ट करेंगे. ओके, सो आई एम अ रिबेल. I always make sure that I do exact opposite of what my parents are expecting of me. Okay, so that is a rebel. Okay, so rebel का मतलब नाउन की तरह यूज किए हैं एंड वर्ड में भी रिबेल ही होता है. ओके, सो ही रिबेल्ड अगेंस्ट the ongoing injustice. He rebel against the ongoing injustice. Okay, so rebel can be noun as well as verb. Okay, all right, keep the sentences going. Intra is a prefix. Okay, intra क्या होता है? prefix होता है. इंट्रा और इंटर यहाँ पर यूज हुआ है इस एडिटोरियल में. इंट्रा और इंटर यूज हुआ है, राइट? इंट्रा एंड इंटर. सो दोनों का, इंट्रा का क्या मतलब होता है? इंट्रा हाउस कंपटीशन होता है, राइट? इंट्रा हाउस कंपटीशन जिसका मतलब होता है ऑन द इनसाइड, विद इन, किसी सिस्टम के अंदर ही में. ओके, सो इज इंट्रा, किसी सिस्टम के अंदर में होना इज इंट्रा. ओके, सो intra management of the company. Okay, intra management of the company या intra house competition. So intra is basically within the system, कोई भी system के अंदर, और inter is outside the system, right? So in inter house competition होगा, that means आप different houses के साथ लड़ रहे हो, right? So red house, yellow house ऐसे होते हैं ना स्कूल्स में. सो इंटर हाउस कंपटीशन वुड बी आप एक हाउस दूसरे हाउस से लड़ रही है, बट intra house competition would be in within the house. Let's say the house का
नाम है स्लिदरिन. ओके, सो इन इंट्रा स्लिदरिन कंपटीशन वुड बी स्लिदरिन हाउस जो है उसके अंदर का कंपटीशन. ओके, ऑल राइट. सो डायनामिक्स, डायनामिक्स क्या होता है ये भी हमने वर्ड पहले कर लिया है. डायनामिक्स किसी चीज का द फोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच स्टिम्युलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट और चेंज विद इन अ सिस्टम और प्रोसेस. सो अगर किसी चीज का डायनामिक्स चेंज हो रहा है मतलब सिस्टम में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज कर रहा है सिस्टम को, डेवलप कर रहा है सिस्टम को इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, सो द डायनामिक्स आर चेंजिंग ऑफ द सिस्टम. ओके, सो अगर किसी चीज का डायनामिक्स चेंज हो रहा है मतलब उसका सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो रहा है. All right. Then you have diffuse. Diffusing हम generally use करते हैं bombs के लिए, right? So the bomb was diffused, or we have to diffuse the bomb, otherwise there will be a lot of casualties. So diffuse करना अगर हम situation के लिए use करते हैं तो basically एक ऐसे situation को, एक difficult या dangerous situation को काम कर देना, उसको रिड्यूस कर देना, उसको रिमूव कर देना. ओके, ताकि वो ना हो पाए, कोई डेंजरस सिचुएशन ना हो पाए, उसको नहीं होने से उसको होने से रोकने को कहते हैं डिफ्यूज कर देना उस सिचुएशन को. ओके, सो इट इज एग्जैक्टली द सेम एज इट इज यूज्ड इन a bomb situation. Okay, so diffuse करना make यहाँ पर situation के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि to make a difficult or dangerous situation calmer by reducing or removing its cause. Okay, तो उसका cause को remove कर देना या reduce कर देना is to diffuse a situation. अगेन ये सारे वर्ड्स जितने भी ये वर्ड्स है देखो, डिफ्यूज है, फिर churn है, फिर brew है, all these are used in situation. Okay, ये सारे जो definitions दिए हुए ये situation के हिसाब से दिए हुए हैं, किसी किसी का situation. So most of these words are used in a situational way, in a connotation way, है ना. तो brewing, brew. Okay, brew करना मतलब is basically we brew beer. Okay, so or coffee is also brewed. Okay, so generally beer. बट यहाँ पर ब्रू करना किसी चीज को इज इफ एन अनप्लेजेंट सिचुएशन और अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग. अगर कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन, कोई नेगेटिव सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो आप नहीं चाहते हो वो हो रहा है, या एक स्टॉर्म इज ब्रूइंग. ओके, if someone is saying unpleasant situation is brewing या कोई storm is brewing, you feel that it is about to happen. Okay, so brewing is basically making. Okay, making beer is a process of making beer. So in the same way अगर कोई हम situation को बोलते हैं, generally negative चीजें brew होती हैं. Okay, so we don't generally use it for a negative way, but sorry, positive way, लेकिन कभी कभी हम use कर लेते हैं, like a friendship brewed between the two. Okay, a friendship brewed between the two, but generally using for negative connotation. तो unpleasant situation या किसी तूफान के आने की तूफान ब्रू हो रहा है, सो इन दैट केस आप क्या फील कर रहे हो कि होने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है. ओके, सो दैट इज ब्रूइंग. सो वी सॉ चर्न, एंटिसिपेशन, रिबेल, इंट्रा, डायनामिक्स, रिफ्यूज एंड ब्रूइंग. लेट्स लुक एट द सेंटेंसेस नाउ. ओके, study with ease. Good afternoon. Okay, we have the sentences. आशु, आपका गुड इवनिंग भी हो गया. बहुत लोग मुझे गुड इवनिंग बोल रहे हैं. गाइस, गुड इवनिंग कब शुरू होता है? 4 बजे के बाद शुरू होता है. ओके, एंड इट गोज ऑन टिल यू विश, टिल समवन इज गोइंग टू बेड. ओके, जब तक कोई सो नहीं रहा है और आप जानते हो कि कोई सो नहीं रहा है तब तक आप गुड इवनिंग ही बोलते हो. ओके, तो शाम 4 बजे से आप जितना गुड इवनिंग बोल रहे हैं आपको बोल लो. अभी 12 बजे के बाद क्या होता है? गुड आफ्टरनून होता है. ठीक है, 12 से 4 इज गुड आफ्टरनून. सो स्टिक टू गुड आफ्टरनून एवरीवन. All right, I churned to cake batter. I churned the cake batter. Okay, churned to nahi, I churned the cake batter. I don't like it when someone churns the cold drink. Nice, Hanaya. I'm ready to claim the mantle and to become CJI. Okay, very nice, Nishita. Good job.
I don't know why my parents are churning the same thing by anticipating my future placement. Very nice, Kathamrita. Good job, and I can completely understand the situation. Um, Ria to claim the mantle of tomorrow's party did something. Okay, so Ria to claim the mantle of tomorrow's party uh, dressed up fabulously, or you can say practiced really hard for the competition. Okay, so uh, party, but you were saying, right? So dressed up really well. Okay, so Vaishnavi incomplete hai. Okay. Hanaya, I always anticipate about the things which are never possible under my mother's surveillance. Okay, Hanaya, got it. Good sentence. Now also judges have decided on rebel issues. Now also, even now, okay, instead of saying now also, even now, the judges haven't decided. Even now, the judges haven't decided on the rebel issue. Okay, on the rebel issue. Good job, Nishita. Hivan, the recent rain had churned up the waterfall into a muddy whirlpool. Very nice. Very nice, Hivan. Good job. Chat GPT. I know. But it is okay. Even if they are making sentences with chat GPT, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. But I would ask and urge everyone to avoid chat GPT so that you can remember the words. My mother always anticipates that I will get a top NLU. Very nice, Vaishnavi. Very nice. Hanaya, I claim the mantle and work hard and make my future worth living. Very nice, Hanaya. Good job. I am the one who is responsible for all the intra issues. Very nice, Nishita. Issues. My mind is always rebellious of my heart. Okay, my mind is always rebellious of my heart. क्या सुंदर सेंटेंस हो जाता अगर आप rebel के जगह rebellious यूज कर लेते. कोई नहीं, वैष्णवी, good job though. After independence, good statement. After independence, we can see a dynamic change in democracy, especially during the 1979. Very nice, Nishita. Good job. Hi, Vishu. You are here. Yay. Okay, your class are the leading dynamics to crack CLAT. Very nice, Naya. Good job. I diffuse my friend's silly advice. Very nice, Vaishnavi. Good job. The organization helped diffuse potentially violent situation. Ashu, good job. The military rebel, the people who put them down, had both shown savage faces in Manipur. M capital likh do, Hivan. That would be great. The military rebels and the people who put them down had both shown savage faces in Manipur. Very nice, Hivan. Good job. My father is best at diffusing the brewing situation at home. Very nice, Hanaya. Good job. Whenever I am quiet, it means soon you will face a brewing storm. Okay, soon whenever I'm quiet, it means a storm is brewing inside me. So you know that a situation is coming. आपको बताना नहीं है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है. आप बस बोल दो कि when I'm quiet, you should know that a storm is brewing inside me. Okay, so that means कि आगे जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है. Okay. I don't like to share my intrapersonal information with anyone easily. Very nice, Anaya. Good job. Anticipation क्या है? Anticipation है expectation. ठीक है, निशिता? At exam time, I feel that something will brew. Okay, at exam time, I feel that something will definitely brew. Kirti, hi. I am anticipating I will do good in mocks if I change my dynamics. Very nice, Kirti. Good job. The dynamics of socialism is well versed in the modern capitalist society where people want more assets, but they don't know these things will vanish like them one day. Very nice, Kathamrita. हो philosophical हो गया. कंज्यूमरिज्म पे आप सीधा टारगेट कर रहे हो. कैपिटलिस्टिक मार्केट पे टारगेट कर रहे हो. ओके.
Okay, Alpesh, you travel quite a lot, Alpesh. Okay, so you keep going from your parents' house to I think the hostel that you're staying in. You will try to face every brewing situation in my life. You will try to face every brewing situation in my life. What is this, Vishu? No, no, nobody's going to take that responsibility off your hands. You take all the brewing situations in your life, okay? Congratulations to you. Don't, okay, yes. So, yeah, I will try to face, very nice. Now it is fine. I will try to face every brewing situation in my life. Good job, Vishu. Yes, you took the responsibility on your own shoulder. Don't fire guns on others' shoulders. Do it on your own. The second was in this rather audacious attempt. The second was in this rather audacious attempt to claim the mantle of the trade unions. The second war, I think, must be the second war in this rather audacious attempt. The second was in this does not make any sense. The second was in this यहाँ से सही है rather audacious attempt to claim the mantle of the trade unions. But the first half of the statement has to change. Hivan? Trouble has been brewing for some time now, but I have managed it by gifting her a necklace. Good job, Kapalita. Okay, trouble has been brewing. This is a very common phrase. Okay, trouble brews in such societies, or trouble is brewing in a certain situation. Okay, very nice, Katharvita. I can anticipate that I will be going. Okay, that will going to happen. I can anticipate what is going to happen with you if you don't complete my homework. I can anticipate. Oh, बहुत भयंकर धमकी निशिता. You can be a good teacher, I think. People will be terrified of you. Kirti, my mother thinks I am very rebellious towards social issues, uh, to social issues, and she always anticipates something will brew within me. Okay, something will brew within me. Very nice, Kirti. Good job. The job was harder than I anticipated. Very nice. As simple as that. Good job, Ashu. She tried to diffuse the situation on her anticipation, but ended up with churning up the whole, the whole something. Ria, she tried to diffuse the situation on her own. Um, okay, she tried to diffuse the situation with anticipation that things will churn out well. Okay, that things will churn out well. Okay, Ria? Yeah, you are a bit philosophical, Kathamrita. Yes. English is one of the CLATs intra command. English is one of CLAT's intra command. Mm, um, among among topics of CLAT, English is an intra command. Okay, okay, Vaishnavi, मैं अच्छी advocate भी बन जाऊंगी. I'm sure, Nishita. I'm definitely sure. I'm definitely sure. I'm not asking you to change the line of work, but I'm just saying, if you were an English teacher, had you been an English teacher, you would have scared the living hell out of people. ओके, रिबेलियन का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा यहाँ पर रिबेलियस, रिबेलियन, रिबेलियस, रिबेलियन, रिबेल. ओके, so rebellion is also noun. Okay, an act of armed resistance to an established government or leader. Okay, is the rebellion. ठीक है, कोई भी armed resistance कोई established government के against किया जाता है. Okay, so that is called a rebellion. So in इसका synonyms can be very important. These are the synonyms. Uprising बहुत important है. Rebellion का another word is uprising. Okay, insurrection is also another word for rebellion. Okay, so you can make sentences with insurrection or uprising.
over here. Okay, insurrection and uprising is rebellion. Patriarch, okay, patriarch किसको कहते हैं? The male head of the family or tribe को हम patriarch कहते हैं. Patriarchy किसको कहते हैं? The system in which the male is the dominant character of the family or the leader of the family, okay, or the tribe. Okay, patriarchal society होता है. So अभी तक most of the societies are patriarchal societies जहां पर male members are the head of the family. But some societies, like if you go to Maulanong village, is a matriarchal society where women or the female is the head of the tribe. आपने मनी हाइस्ट अगर देखा होगा, उसमें भी देखा होगा कि when all the boys, I think all the men fall down and this woman takes over. What is her name? She says in the end of the episode that it's matriarchy time. Okay, so or something like that she says. Okay, so matriarchy is um female head of the family or tribe, and patriarchal society is the male head जो हम normally देखते हैं. Male head of the family, उन्हीं को सारे property जाते हैं, उन्हीं को सब कुछ मिलता है, because they are considered the one who will carry on the lineage and the order of the house. Okay, so or the responsibilities of the house. Male is the provider and protector of the family. So patriarch is the male head of a family or tribe. Back in the saddle मतलब कोई चीज आप करना बंद कर दिए थे. Let's say for this is an idiomatic expression. ठीक है, IE is an idiomatic expression जिसका मतलब होता है doing something that you stopped doing for a period of time. तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप करना बंद कर दिए थे कुछ टाइम के लिए, and now you have started doing it again. Okay, so back in the saddle, back in the game, all these are the idiomatic expression which tells you कि कुछ चीज आप करना छोड़ दिए थे, फिर आपने फिर से start कर दिया. Okay, that is back in the saddle. Saddle भी हमने देखा है. Saddle is basically when you when you ride a horse. Okay, the place where you keep your feet is called the saddle. Okay, so basically back in the saddle is back back to riding horse, but idiomatic expression that means back in the game. Okay, that means back to what you were doing before you are doing it again. Okay, all right. So the next word is something जो हमने बहुत बार reiterate कर दिया है. So reiterate and iterate. Iterate का मतलब होता है say something, say one thing, repeat one thing. Okay, and reiterate is say something again or a number of times. Okay, so reiterate बहुत बार दोहराना. आइट्रेट इज टू दोहराना. ओके, आइट्रेट का मतलब दोहराना और रीआइट्रेट का मतलब बहुत बार दोहराना ताकि एम्फेसिस आ जाए. ओके, एम्फेसिस या क्लैरिटी आ जाए. ओके, so reiterate the word. Can you reiterate the words please, or can you reiterate the grocery list please? Okay, so आपको let's say आपकी मम्मी ने भेज दिया प्याज टमाटर आलू अंडे और ब्रेड और पता नहीं क्या क्या लाने, आपको याद नहीं रहा list, and you thought that you would remember but then you did not, and then you go back to your mother with tail between your legs and you say mom, can you please reiterate the grocery list? Okay, so that is reiterate. Okay, say something again or a number of times, typically for emphasis या clarity, ताकि आपको clarity आ जाए, इसीलिए बात दोहराया जाता है, या तो emphasize करने के लिए. जैसे when I say get to class, I repeat get to class, that is reiterating the same thing. Okay, so that is for emphasis. Okay, bequeath. Okay, bequeath is a new word. bequeath हमने पहले कभी नहीं देखा है. It means leave property. नहीं हमने देखा है. Leave property to a person or other beneficiary by your will. ठीक है, अगर आप अपनी property bequeath कर रहे हैं. Okay, Nishita will make I'm sure a lot of good sentences with this, because this Nishita ये तो आपके favorite word cluster में आना चाहिए, because leaving property
लीव प्रॉपर्टी टू अ पर्सन और अदर बेनिफिशियरी बाय विल, ठीक है, किसी भी एक इंसान को या अदर बेनिफिशियरी जो उस विल के बेनिफिशियरी है, मतलब उस विल से जो बेनिफिट करेंगे, जिनका विल में नाम है, उनको प्रॉपर्टी उनके हवाले कर देना या छोड़ देना इज बिक्वीथ। ओके, बिक्वीथ, बिक्वीथ, बिक्वीथ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट द हेल? इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? टू टर्न समथिंग सो एज इट्स टॉप इज एट द बॉटम, और पुट समथिंग इन द ऑपोजिट ऑर्डर और पोजिशन, ठीक है। तो कोई चीज, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, माय nose keeps itching. Okay, so to turn something so as so its top is at the bottom, or put something in opposite order or position, कोई भी चीज को उल्टा कर देना, okay, is to invert. Okay, so invert a situation, situation को उल्टा कर देना, ठीक है। जिसमें opposite order आ जाएगा, ठीक है, opposite order आ जाएगा। अगर हम लेट्स से इन्वर्ट कर देते हैं ये ऑर्डर को, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये ऑर्डर को अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, वर्ब, देन सब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज इन्वर्टिंग द स्टेटमेंट, है ना। सो इन्वर्ट करना इज टू टर्न समथिंग सो एज इट्स सो its top is at the bottom, or put something in opposite order or position. All right. Hierarchy बहुत important word है, ये spelling में generally आपको पूछा जाएगा because it has got a confusing spelling. It has got a confusing spelling. What did I do with my nose? हायरार्की, ठीक है, हायरार्की का स्पेलिंग HIERARCHY होता है। HIE, रिमेंबर, HIE, HIRARCHY नहीं होता है, HIERARCHY होता है हायरार्की। ओके, एंड स्पीकिंग ऑफ हायरार्की, ऐसे दो तीन और स्पेलिंग है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे वैक्यूम। ओके, वैक्यूम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें लोग ऐसे लिखते हैं वैक्यूम, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वैक्यूम का सही स्पेलिंग क्या होता है? VACUUM होता है, राइट। सो इन द सेम वे हायरार्की का स्पेलिंग ये होता है। एंड लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो गेट कंफ्यूज विथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस। ओके, इसमें कोई भी पोजिशन पे आई नहीं आता है। सेम गोज विथ कमिटी, लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज विथ कमिटी एज वेल। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कंफ्यूजिंग वर्ड्स। मेक श्योर दैट यू, ओ, वन, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का आप कैसे लिखते हो? ल्यू। ओके, ल्यू, टेन and okay, lieutenant। okay, so make sure that you are breaking spellings into different parts। अगर आपको spelling पे question आते हैं तो make sure when you're noticing the spelling you're breaking them into different parts and then looking at spelling। okay, so hierarchy is a system। मैंने बहुत गंदा कर दिया बोर्ड को, but let me change all that। सुंदर, सुंदर। okay, a system in which members of an organization or society are ranked according to relative status or authority। तो ऐसा एक सिस्टम जिसमें जो मेंबर्स हैं उस सिस्टम के अंदर, ओके, उनको किस तरीके से ऑर्डर किया जाता है? बेस्ड ऑन देयर रैंक्स। ओके, रैंक के बेसिस पे या उनका स्टेटस के बेसिस पे या अथॉरिटी के बेसिस पे। ओके, so hierarchy in a company, you see that at the top you have the CEO of the company, the co-founder of the company, then the COO, the CFO, and then the uh, regional managers, the manager, then the employee। okay, so that is a hierarchy। okay, hierarchy का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम या ऑर्डर, जिस एक ऐसा सिस्टम या ऑर्डर जो एक सर्टेन ग्रुप के मेंबर्स को क्या करती है? उनको एक ऑर्डर में करती है, एक सीक्वेंस में बैठाती है। कैसा सीक्वेंस में? उनके रैंक के बेसिस पे, या उनके स्टेटस के बेसिस पे, या उनके
उनके अथॉरिटी के बेसिस पे। Oh my God, something is really wrong with my nose. Okay, professedly. Next word and the last word of this vocabulary is professedly, जिसका मतलब होता है this is an adverb. Okay, ये एक adverb है जिसका मतलब होता है ostensibly. Remember this word as well, ostensibly or professedly, apparently. All these are synonymous. आप कोई भी यूज कर सकते हैं professedly, ostensibly, ostensibly and apparently. Okay, so apparently, uh, जैसे कि जैसा दिखाई दे रहा, okay, apparently she is going to the market. Okay, apparently she is going to the market, मतलब ऐसा दिखा रही है that she is going to the market. So ostensibly she is going to the market, or professedly she is going to the market. Okay. Okay. So these were the words: rebellion, patriarch, back in the saddle, reiterate, bequeath, invert, hierarchy, professedly. All right. So let's look at the sentences real quick. X's and the O's, they haunt me. Like O's, they want me to make them O's. All right, your class, ये मैंने पढ़ लिया था. I don't. Okay, you will try brewing. आप एडवोकेट क्यों नहीं बनी? क्योंकि मुझे बनना ही नहीं था विशु. इसीलिए नहीं बनी. Okay, I never thought of it. I never knew of this opportunity. मुझे नहीं बनना था, इसलिए नहीं बनी. Okay, my mom also say the same thing about me. Okay. The rebellious approach of the commoners is not feasible, and everyone involved in this brawl should be punished. Very nice, Kathamrita, very nice brawl and all that. Ishan's favorite word? Oh my God, Ishant is here. Ishant, hello, welcome, welcome, welcome. I'm so glad to see your sentence, Ishant. Please make sure that you are alive in my sessions, please. Okay. I don't know why I am brewing while buying ice cream. Oh, I had just forgotten to turn off the water pipe that was filling my cooler. I don't know why I was brewing while buying ice cream. I don't know why I was brewing while I was buying ice cream. Oh, I had just forgotten to turn off the water pipe that was filling my cooler. I didn't understand the association of both the sentences, Ishan. The sentences are grammatically absolutely fine, but I don't know what it means. I'm back in the saddle with my CLAT prep after boards. Very nice, Vaishnavi. Good job. I have stopped playing professional cricket for a long time, but now after the exam, I'm back in the saddle. Very nice, Kathamrita. Good job. Hanaya, patriarchy has been continuing since long ago, but we must not ignore the fact that it is declining gradually in the society now. It never worked. Too much of war. Matriarchy is the way. This is the way. कुछ ज्यादा ही मैंने मैंडलोरियन देख लिया है, so this is the way. For everything, this is the way. Okay. Yeah, always. I am back in the saddle with my CLAT prep after board exams. Vaishnavi, good job. I reiterate a single answer many times to remember that answer in time to come. Okay. Very nice, Nishita. Good job. The lawyer, however, could only reiterate what he had said before. Very nice, Hivan. Good job. Upside down, like in Stranger Things. Upside down. Yeah. Dora. Hello, Dora. My mom is reiterating to end my ongoing relationship, but I showed my reluctance
in that, and after that, everyone knows what's going to happen next. Yes, it's a tragedy. Another man fallen. It's such a tragedy. Kathamrita, we wish you all the best. When I got low marks, then I reiterated mocks analysis. Reiterated my mock analysis. Very nice. I capital Vaishnavi, please, please. My mother reiterate about me getting a new haircut that I had to get one while it was raining badly. Oh my God, I feel very, very sad for you. How will you go out in the rain? And how will you cut your hair in the rain? I'm kidding. Good sentence, okay? Uh, oh my dear ex, I am saying this thing to you. Please bequeath your property to me. I will I will track sorry, I will take care of it and sell it at the highest price and then do shopping with the money. Wow, Nishita, great plan. I'm totally game for it. Very nice. Good plan. Ashu, I can reiterate the instruction if you need me to. Yes, Ashu, good job. Very nice. I always invert situations according to my comfort. Very nice, Nishita. Absolutely correct sentence, Nishita. Good job. I have chosen law to maintain my hierarchical legacy and eminence. Very nice, Kathamrita. Good job. I'm okay to bequeath my amount of shares to my brother happily. And I have very nice sentence and I truly appreciate. I also have a younger brother and I would also not mind bequeathing my property to my younger brother. If he hears this, he will be really happy. But निशिता हाँ मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ. I know that question is not for me. Do I have to reiterate everything I just said? Ashu? Annoyed, but good sentence. Yes. When Rajat got into a fight with his father, then he said then he asked to bequeath his whole property. Okay, good job. We have a hierarchy, same as a courtroom at home. Very nice, Sanaya. What a brilliant sentence. If you keep failing to achieve your goal, it indicates you are reiterating the same mistake as before. Very nice, Ashan. Good job. Hierarchy said system is a very common thing, and you will see it everywhere in government, home, and in companies also. Companies में apostrophe s नहीं होगा, Anishita, but sentence is absolutely correct. In most organizations, there is a clear hierarchy of authority with top level executives making important decisions and lower level employees carrying out the day to day task. Very nice, Ashu. Good job. What a brilliant sentence. Good job. I inverted the topic when I found myself guilty. Very nice, Vaishnavi. I do that too. Professionally, I am still waiting for the permission to go on a trek. Professedly, I'm still waiting. Very nice. You used it in the beginning of the sentence. ऐसे use होता है जैसे हनाया ने use किया. You apparently, या professedly, या ostensibly, you start the sentence with and then you put a comma and then you complete the rest of the sentence. Very nice, Hanaya. The apocalyptic writer therefore professedly addressed his book to future generation. Very nice one. Um, Sam was professedly guilty of the murder. Very nice, Ashu. Good job. The Honorable Justice declared that Mr. Ray was professedly guilty of all the murders and sentenced him to death. Very nice, Kathamrita. Good job. Okay. Kirti, my father will bequeath his property to me only if I get back in the saddle with my good habits. Very nice, Kirti. What a brilliant sentence. I really like this one as well. Um, she always try to invert the situation professedly when she doesn't want to talk. Very nice, Kirti. Again, good job.
The attempted takeover seems to have sprung from the lower strata of the military hierarchy. Very nice, Hivan. Good job. Chat GPT, but good job. Whenever anything happens, uh, mistake हटा देना चाहिए in my family, then automatically, then I professedly am guilty of all the mistakes done by everyone. Okay, Vaishnavi, hear that again. Okay, I have bequeathed all of my stuff to my loved one, but she left out of the bly. I know. My friend is ready to. Kathamrita, can you rephrase that? I did not understand. Yahan tak sentence is absolutely fine. I have bequeathed all my property, all my stuff to my loved one. Very nice, Kathamrita. Good job. But why have you done that yet? You're not yet married. Don't be a fool, Kathamrita. Don't be a fool. I bequeath all my valuables to my beloved friend, but she scooted. Me nahi hoga, scooted. Okay, scooted matlab bhag jana. Okay, but she scooted. That's a sad ending, and that is exactly what will happen if you bequeath all your property to your girlfriend. Okay, if Vishu doesn't stop doing nonsense, I will professedly take a strict action against him. Okay, take a strict action against him. Nishita, good job. Vishu, you should be scared. I live in a patriarchal society and I'm very desperate to invert this system. Wow, Kirti, good job. Very nice. I love this statement. I will give you a heart. I will give you a heart for this statement. And that is not for me, that is for you, Kirti. Very nice. दिख तो रहा है निशिता, I'm saying all those things. दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है. Still, this is exactly what those left behind bequeathed. Very nice, Himan. Again, compliments to ChatGPT. All right, so these were the words. Very nice, fantastic. Good job, all of you, for completing all the words. And we have made a lot of sentences today, right? We have done a lot of sentences. बढ़ते हैं हम अपनी बाकी के सेशन की तरफ. Before that, important announcement that you can get flat 20% off on your Unacademy subscription if you use my code Vaishnavi10. Okay, use my code Vaishnavi. मेरा और दूसरी वैष्णवी दोनों का कोड है Vaishnavi10. So if you want to get associated with us and start taking plus classes or CLAT preparation more seriously, तो ये offer बस valid है May 13th तक. Make sure that you use my code Vaishnavi10 to get flat 20% off on your extension, on your subscription. Sorry, 6 months plus 1 month extension मिल रहा है आपको if you take this course. So if you take this batch, so this would be more suitable क्योंकि अभी बस 7 months बाकी है and this would be perfect for you. 8 to 7 months. Now, CLAT printed mocks tests are here, जिसमें आपको 10 sectional mocks मिलेंगे, 10 full length mocks मिलेंगे, and this will be delivered right at your doorstep. And this is available for all iconic and 9-month and above plus subscription के batches के लिए ये offer available है. SLAT का 12 comprehensive sectional test and 2 full length mock test आ गया है जो आपको 665 में मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं Vaishnavi10. So don't forget to use my code Vaishnavi10. अब मई मंथ का कैलेंडर आ गया है. डोंट फॉरगेट, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट May 14th एंड May 21st को आपका क्लैट स्कॉलरशिप है, लेकिन May 21st को इज द फ्री क्लैट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जो don't forget to attend. Okay, very very important. And plus students, please make sure that you attend the May 14th wala bhi calendar mock.
Now you are supposed to give one mock per week now. You are in May, so one mock per week. Ideally, everyone who's preparing for CLAT, आप सबको एक mock per week देना ही देना है. So make sure that you're giving all these mocks. Okay? At least मैं कह रही हूँ. At least one mock per week. Okay? Even if you are not prepared, अगर आपको लगता है कि preparation पूरी नहीं हुई है, फिर भी देना mock. अब वैष्णवी 10 अगर आप use करोगे इस batch में, अगर आपको enroll करना है अपने आप को, so this batch has started from May 4th, and if you want to enroll in this batch, then you can use my code Vaishnavi10 to get flat 20% off. And this is a Warriors batch जिसमें मैं English language पढ़ा रही हूँ. Crack CUET PG Law DULLB in 30 days is an intensive course for DULLB जो 27th April से शुरू हुआ है. Enroll now. Let's start, and I love the title of today's editorial क्योंकि ये title जो है ना, can anyone guess which figure of speech is the title of today's editorial? क्या which figure of speech would you put this into? Which figure of speech is this? Can you tell me? Which figure of speech? Okay, Nigam, then please do attend the classes, do subscribe to the channel, and don't forget to use my code. Yes, but which figure of speech would you say this qualifies as? Which figure of speech would you say this qualifies as? No, not alliteration. No, not alliteration. Definitely not. One of my favorite. One of my favorite. I like three figures of speech the most. So this is one of them. Okay, so I like paradoxes. I like puns. And I like alliteration. But not alliteration. Litotis, I think. Third one is confusing. Not really sure. But these two are my personal favorites. Irony. Sarcasm. 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 इन्फॉर्मेटिव विशु आप कहाँ से उठ के इन्फॉर्मेटिव उठा के लेके आ जाते हो? यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ ये पवार प्ले क्या है? इट इज अ पन. ओके, इट इज pun. Basically, power play ko they have converted it to power play. Okay, so I really like the way. Good job, Vaishnavi. Good job. It is a pun. This is called a pun. Okay, so let's get started with the editorial. सबसे पहले मेन आइडिया देखते हैं. मेन आइडिया कंक्लूजन. सबसे पहले Maharashtra might see a fresh churn as the election approach. Okay, so Maharashtra को एक नया churn किया हुआ सिस्टम मिलेगा जैसे जैसे इलेक्शन अप्रोच हो रहा है, तो ऐसा एंटिसिपेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस बिकम्स द कंक्लूजन. माइट सी अ फ्रेश चर्न एज द इलेक्शन अप्रोच. ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन. लेट्स start with the main idea. Politics in Maharashtra is in an intense churn. Okay, so politics in Maharashtra, इसी के बारे में बात करने वाला ऑथर कि पॉलिटिक्स कैसे महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है. ओके, की एक्टर्स आर ट्राइंग टू फिगर आउट, और इसमें जो की एक्टर्स हैं, की प्लेयर्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि their most advantageous positioning ahead of Lok Sabha and Assembly elections that are secluded for that are scheduled, sorry, that are scheduled for next year, and in anticipation of the Supreme Court decision on Thursday on disqualifying Chief Minister Eknath Shinde. Just 1 second. Okay. What is wrong with this one today? Advantageous position ahead of Lok Sabha and Assembly election that is scheduled for next year. Okay, so this is the main idea. यहाँ तक main idea है आपका कि
अब इसमें जो की प्लेयर्स है, महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स चेंज होने वाला है। क्यों चेंज होने वाला है? क्योंकि सारे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं इस इलेक्शन के, ओके, लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस होने वाला है नेक्स्ट ईयर, ओके, इसके लिए अब अपने आप को एडवांटेजियस पोजीशन में पोजीशन करने लगे हैं जितने भी दिग्गज खिलाड़ी, ओके। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस एडिटोरियल, यहां तक मेन आइडिया है। एंड दिस इज एंड एडिशनल टू दैट, इन एंटिसिपेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ऑन थर्सडे ऑन डिस्क्वालिफाइंग, उन्होंने क्या किया, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को डिस्क्वालिफाई कर दिया along with 15 other legislators who left with him to claim the mantle of the Shiv Sena by rebelling against Uddhav Thackeray, the son of Sena founder Bal Thackeray in June 2022। तो एंटिसिपेशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये पॉलिटिक्स चेंज कर रहे हैं, गेम चेंज कर रहे हैं दो रीजंस की वजह से। एक तो इलेक्शंस आने वाला है अगले साल, और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा इन ये चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और ये जो 15 लेजिस्लेटर्स का है, उनको डिस्क्वालिफाइड कर दिए हैं। तो ये पूरा डायनामिक्स चेंज कर रहा है सिस्टम का, राइट? क्योंकि वो क्या प्लान कर रहे थे, दे वर रिबेलिंग अगेंस्ट उद्धव ठाकरे जो है बाल ठाकरे का बेटा, ओके। सो दे वर ट्राइंग टू टेक ओवर हिज थ्रोन, है ना, उनका उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, ओके। तो अब पूरा गेम चेंज हो गया है, राइट? इंट्रा एंड इंटर पार्टी डायनामिक्स आर एट प्ले, दोनों इंट्रा पार्टी और इंटर पार्टी डायनामिक्स अभी आर एट प्ले, मतलब ये मोशन में है अभी, अभी इसमें चालू हो गया ये गेम, ओके, आर एट प्ले, ओके। सो शरद पवार्स dramatic announcement that he was quitting the post of president of the National Congress Party NCP, that had the intended effect of diffusing a brewing rebellion led by his nephew Ajit Pawar, who thinks it is time to carve out his own path and come out of his uncle's shadow, okay। तो basically ये एक situation इसी में describe कर रहा है कि अब डायनामिक्स कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ओके। पहले ठाकरे का एग्जांपल ले लिया, अब पवार पे आए हैं, ओके। तो शरद पवार ने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि वो प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ एनसीपी वो क्विट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्विट कर रहे हैं ताकि एक सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए वो ये क्विट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो नेफ्यू हैं अजीत पवार, उन्होंने सोचा कि अब मेरा टाइम है ताकि मैं अपना राह अब खुद ही बना सकूं और अपने अंकल के परछाई से बाहर निकलूं। इसीलिए उन्होंने एक रिबेलियन चालू किया था अपने अंकल के अगेंस्ट। तो उसी रिबेलियन को शांत कराने के लिए इन्होंने, शरद पवार ने क्या कर दिया, क्विट कर दिया, ओके, एनसीपी के प्रेसिडेंट का पोस्ट क्विट कर दिया। द पेट्रियार्क इज बैक इन द सैडल। अब पेट्रियार्क बैक इन द सैडल मतलब अब वही होगा इनका बेटा, या इनका इनका जो नेक्स्ट इन लाइन है, विल टेक ओवर, ओके, बैक इन सैडल, एंड द नेफ्यू हैज रीआइट्रेटेड हिज लॉयल्टी टू द पार्टी, बट द स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर। तो अब सब कुछ सही हो गया, वापस से पेट्रियार्की हो गया, जिसमें अब नेफ्यू विल टेक ओवर द पोस्ट, ओके, और पार्टी को लॉयल्टी पूरा दिया है कि ही हैज सेड दैट ही इज कंप्लीटली लॉयल टू द पार्टी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मिस्टर पवार 82 wants to bequeath his political legacy, ओके। यहां पर देखो कुछ कुछ लाइंस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पर ये वाला, दिस इज चेंज अ चेंज इन द डायनामिक्स, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अब यहां पर अगेन ये वाला जो पॉइंट है, wants to bequeath his political legacy to his daughter, लेकिन पवार क्या करना चाहता है, अपना लेगेसी अपनी डॉटर को छोड़ना चाहता है, सुप्रिया सुले। but he is also plotting the national terrain for his own potential role in the run up 2024। बस यही नहीं, वो अपनी बेटी को अपना पोजीशन देना चाहता है, अपना लेगेसी अपनी बेटी के हाथों में सौंपना चाहता है। लेकिन इसके अलावा उनका और एक इंटेंशन है, हिडन एजेंडा है, दैट इज कि वो
नेशनल टेरेन में घुसना चाहते हैं. ओके, ही इज प्लॉटिंग पोटेंशियल रोल इन रन अप टू द 2024. ओके, 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें ये अपना पोटेंशियल रोल ये करना चाहते हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई ही हैज क्विट on one side, and he wants to give his power to his daughter. The Bihar chief minister, अब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब again this is about someone else. Okay, अब Bihar chief minister, the Bihar chief minister Nitish Kumar, who is championing the unity of parties that are opposed to the Bharatiya Janata Party. तो नीतीश कुमार चैंपियन किस चीज को कर रहे हैं? वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली जितने भी पार्टीज अगेंस्ट हैं बीजेपी के, उनको साथ में ऑपोजिशन को लाने में चैंपियन कर रहे हैं, सक्सेसफुल रहे हैं. तो ये ही विल बी इन मुंबई लेटर दिस वीक टू मीट मिस्टर पवार एंड मिस्टर ठाकरे. ओके, तो ये वहां पर रहेंगे, मुंबई में रहेंगे मिस्टर पवार और मिस्टर ठाकरे दोनों से मिलने के लिए. सो 3 प्लेयर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठाकरेज, पवार्स एंड Nitish Kumar. Okay, Mr. Kumar met the Odisha Chief Minister Naveen Patnaik on Tuesday. अच्छा, तो इन्होंने नवीन पटनायक से भी ये मिले हैं. The BJP, having benefited from the split in the Shiv Sena, is now plotting its next move to dominate state politics on its own. Again, this is a point जिससे question आ सकता है. Okay, so BJP has benefited from the split. Oh my God. इस जो स्प्लिट हुआ था शिवसेना में, उसमें स्प्लिट से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है. और अब बीजेपी क्या प्लान कर रही है? नेक्स्ट मूव इज टू डोमिनेट स्टेट पॉलिटिक्स ऑन इट्स ओन. और अब क्या प्लान करी कि हम खुद से स्टेट पॉलिटिक्स को डोमिनेट करेंगे. ओके, द शिंदे factions ability to sustain itself without an alliance with the BJP is doubtful. So author अपना राय बता रहा है कि ये तो doubtful है कि the शिंडेज बस सस्टेन कर जाएंगे अपना अलायंस बीजेपी के साथ और सक्सेसफुली सस्टेन कर जाएंगे. दैट इज डाउटफुल. बट मिस्टर ठाकरे too has a battle at hand to keep his flock together. और मिस्टर ठाकरे के पास भी एक बैटल है at hand, मतलब उनको भी तैयार रहना पड़ेगा, उनको भी एक लड़ाई लड़नी है, एक जंग लड़नी है, ताकि वो अपने फ्लॉक को, अपनी जनता को, अपने पार्टी मेंबर्स को साथ में रख सके, इंटैक्ट रख सके. He wants to hold on to this to his हिंदुत्व lineage. अब क्या बोल रहा है वो? उनको अपना हिंदुत्व lineage को he wants to stick with it. Okay, उसी के साथ रहना है एंड रिटेन द अपर हैंड इन द स्टेट. और इसी स्ट्रैटेजी के साथ वो अपर हैंड स्टेट में रखना चाहते हैं. द सेना फिनिश्ड behind the BJP in the 2019 assembly election. 2019 में सेना दूसरे नंबर पे थी, बीजेपी पहले नंबर पे थी. ओके, इन्वर्टिंग द हायरार्की बिटवीन द लॉन्ग टर्म एलाइज. तो ये क्या कर दिया? हायरार्की इन्वर्ट कर दिया, मतलब बीजेपी टॉप पे पहुंच गया और सेना नीचे पहुंच गई. ओके, तो इन्वर्ट हो गया इनका लॉन्ग टर्म एलाइज जो ये रहे हैं, तो इनका डायनामिक्स चेंज हो गया, इनका इन्वर्ट हो गया हायरार्की. This divergence or is divergence of interest, this divergence of interest, okay, this divergence of interest between the two Hindutva party led to their split and formation of the triparty Mahavikas Aghadi between Mr. Thackeray and the Congress and the NCP, two professedly secular पार्टीज. ओके, और इसी वजह से जैसे ही वो सेना सेकंड पोजीशन पे पहुंची, तो इस स्प्लिट, तो ये दोनों पार्टी स्प्लिट कर गए और द सेना पार्टी जॉइन हैंड्स विद एनसीपी. राइट, एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया हाथ, और दोनों अपेरेंटली क्या है? सेक्युलर पार्टीज हैं. ठीक है, द Congress projected itself as the secular nation alternative to the BJP, but has to engage in a balancing act that might necessitate sacrificing some of its share of seats to keep the alliance with the Sena intact. तो अपेरेंटली क्यों बोला इनको सेक्युलर? क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा दिखाया कि बीजेपी तो
सेक्युलर पार्टी नहीं है, ये सबके बारे में नहीं सोचती है, तो इसीलिए आप हमारे साथ आ जाओ। अब इन्होंने अपने साथ तो ले लिया है, कांग्रेस ने अपने साथ ले लिया है सेना को, लेकिन इनको भी एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा पावर का। इनको कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी ताकि इनका सेना के साथ जो अलायंस है वो इंटैक्ट रहे, राइट? ऑल्सो द कांग्रेस हैज Also, the Congress has its own internal battles of ego and divergent viewpoint among its leaders. Okay, so Congress के पास भी क्या है? Congress has its own internal battles, और Congress में भी अंदर ही अंदर internal battles चल रहा है, right, of egos and divergent viewpoints among its leaders. So इतना कुछ हो रहा है. Okay, this is the entire power game. Okay, power game. Okay, basically it is a power game that the author is trying to show it to you. तो इसमें different parties ka key actors ka different role, and how are they stuck in the situation, and what are they going to do, anticipate kar raha author, right? So what would be the tone? So all these in light green is something that you are supposed to ignore, आप easily ignore कर सकते हैं। ये जो ऑरेंज में है, इसमें यहां से यहां तक ऑरेंज इज कंक्लूजन, और यहाँ ऑल दीज ऑरेंज आर इंपॉर्टेंट, दीज ऑरेंजेस आर इंपॉर्टेंट, एंड ब्लू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द ब्लू। ऑलराइट, ओके, सो दैट इज इट। कैन यू टेल मी द टोन ऑफ टुडेज पैसेज? क्या मुझे कोई टोन बता सकता है आज के पैसेज का? It is slightly different from the other passages. आज के passage थोड़ा सा different है than other passages. Again informative. No, informative हो ही नहीं सकता। मैं बता रही हूँ आपको, कोई भी editorial informative नहीं हो सकता है। Okay, because एडिटोरियल्स में ऑथर ओपिनियंस देता है, और जैसे ही ओपिनियन आ जाता है ऑटोमेटिकली कोई चीज इंफॉर्मेटिव नहीं होती है, क्योंकि उसमें ओपिनियन है, फैक्ट्स। बस अगर फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं तब इट इज डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव। लेकिन यहाँ पर बस फैक्ट नहीं प्रेजेंट किए, ऑथर एनालाइज कर रहा है सारे इश्यूज को, राइट? सो कि इनको ये करना है, इनको ये करना है, अपने से ये नहीं होगा, इनका ये डाउटफुल है, इनका इनको अपनी सीटें थोड़ी सी देनी पड़ेगी, डाइवर्जेंट इश्यूज है, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, पावर गेम हो रहा है सब जगह। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस ऑल अनफोल्ड्स। ओके, टर्न्स आउट। सो व्हाट विल बी द analytical? Okay, analytical or analytical. Okay, the author is looking at all sides or all facet of the situation, सारे faces को देख रहा है of a situation. So in that case it is analytical. ये जो elections होने वाला है महाराष्ट्र में, इसके सारे aspects, सारे facet को देख रहा है, so that's why it is analytical. All right, yes, Raz, absolutely correct. Thank you. And that is it for today's boys and girls. Thank you for showing your participation, and I will see you for the rest of the classes. Please make sure कि आप Telegram group पे आप मेरे classes के बारे में देखते रहो, so that you know when my classes are happening, and I will be posting today's schedule as well. All right. Shivani, hello. Hello. Ma'am, which course should I keep for CLAT? Source should I keep for CLAT? Are you talking about, Kirti, are you talking about English language? किस section के बारे में बात कर रहे हो? Because there are different books for different section. Good afternoon, Shivani. Bye, Nigam. Bye. No, Alpesh, don't be sorry. I understand you're traveling. That is absolutely okay. And I get motion sickness when I travel and I stare at my phone. So it is really difficult. I can completely understand. I cannot use my phone when I'm traveling. शिवानी, जल्दी बताओ क्या क्या चाहिए जल्दी बताओ। बिकॉज आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप। सायोनारा बस बोलने वाली हूँ, देखो हिवन का और बार भी आ गया है। सो जल्दी बताओ शिवानी। बाय अल्पेश, बाय। Oh my God, Shivani. You like panda? Ashu, good to know. For English. Kirti, you can use
अजय सिंह का एक बुक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके, एक बुक है अजय सिंह का, एंड इट इज बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ओके, यू कैन यूज दिस, और अरुण शर्मा भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, राइट? सो you can use either of the books, but Ajay Singh is my recommendation. All right, that is it. Thank you. I like you too, Shivani. I like you too. Don't. Thank you. Bye bye, everyone. Adios. Au revoir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye.